नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लासेस चैनल को समस्त को वेलकम। सो आज आम संजीवनी 2.0 सीरीज रो जूलॉजी क्लास रो आउ गोटे क्वेश्चन आउ गोटे चैप्टर को डिस्कशन करबा आउ गोटे चैप्टर क्वेश्चंस को डिस्कशन करबा आउ सेइडार सब प्रॉपर एनालिसिस मध्ये करबा सो दैट तमरो अपकमिंग जो रीनीट रो एग्जाम आबा को जाउची सेइडा पई बोली तार से रीनीट एग्जाम रो पर्सपेक्टिव को नेकी पूरा ओवरऑल बेसिस रे आमे सेडा उडी ऑब्जर्व करबा कि केमिदी कोन हमर सेटा बेटर हे परिबो केमिदी आमे इंप्रूव कर परिबा से एग्जाम रे तो से कॉन्टेक्स्ट रे से बेसिस रे आजिरो क्लास ता रहइबो आ आजिरो क्लास रो टॉपिक रहइबो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जोड़ा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मानक भीतर गोटे ह्यूमन फिजियोलॉजी पोर्शन रे जनरली पिला माने एडार जो ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस आउ किछि माने डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन ए कांसेप्ट को नै कि जनरली टिके लैग बिहाइंड करंती बट आजरो क्लास रे आई विल मेक श्योर कि तमानगर से कांसेप्ट्स रो क्लैरिटी रहइबो आउ से कांसेप्ट्स को नै कि हमें फर्दर एग्जाम रे मध्ये भलो करि परिबा ठीक तो आउ देरी न करी कि लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्लास। सो बिफोर वी स्टार्ट तुम माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन नै जिवो हैला मु ए पीडीएफ माने क्लास सरीला परे मैं पीडीएफ तो तमानो सहित डायरेक्टली ए टेलीग्राम चैनल रे शेयर कर देबी आल्सो ए क्यूआर को स्कैन करके मध्ये तमे जॉइन नै परिबो और टेलीग्राम चैनल रो नेम होची बायो बाइट्स विथ संजना मैम हमें एडा को मध्ये तमे टाइप करिवो जदी टेलीग्राम चैनल रे यू विल गेट द लिंक एंड यू कैन जॉइन इन डायरेक्टली इनटू द चैनल ठीक अछि तो स्टार्ट करिबा ताले क्लास हैला ताले भी क्लास स्टार्ट करिबा आउ देरी करिबानी चलो फर्स्ट क्वेश्चन in a reflex arc the neuron responsible for carrying the impulses from the receptor organ to the spinal cord is generally known as multipolar motor neuron carrying efferent impulses to the skeletal muscles, bipolar relay neuron associated with visual and auditory pathways, unipolar or pseudo-unipolar sensory neuron transmitting afferent impulses, neurosecretory neuron involved in hypothalamic hormone release. Yes. So, कौन होगा आंसर? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 रे so here एडी जेमति कि क्वेश्चन नंबर 1 रे देइछि कि से हमरो रिसेप्टर ऑर्गन रो इंपल्स कैरी करिबो रिसेप्टर ऑर्गन रो स्पाइनल कॉर्ड ताहले एना हमर निहते ओडे सेंसरी न्यूरॉन कथा होछि एडी हमें सेंसरी न्यूरॉन कथा एठी होउछे अच्छा किंतु हाँ किंतु आउ किंतु एडी पचार जी ना रिसेप्टर ऑर्गन रो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स आर्क रिलेटेड हैला तो इट विल बी pseudo unipolar or unipolar sensory neuron transmitting the afferent impulses आउ एडा ही हमर रिफ्लेक्स आर्क रे गैंग्लिया रे रिलेटेड हैला ता सहित ये कंसेंट ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर सी ही जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना क्वेश्चन नंबर 2 गुड मॉर्निंग अभिप्शा which of the following statements correctly differentiates neuroglial cells from neurons in the human nervous system neuroglial cells generate action potentials and directly conduct impulses over long distances neurons divide continuously throughout life whereas neuroglial cells completely lack mitotic ability. Neuroglial cells provide nourishment, insulation, and protection to the neurons without specialized impulse conduction. Neurons mainly form the myelin sheath
mainly from the myelin sheaths, while glial cells participate in synaptic transmission exclusively. Question number 2. Hmm. B? Yes. Yes. B will be the correct answer here. B will be the correct answer here. ठीक है जी. अच्छा नहीं B नहीं, sorry. C will be the correct answer. Ada. This will be the correct answer. Now they provide nourishment. They provide nourishment without any specialized impulse conduction mechanism. ସେମାନଙ୍କର impulse conduction ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର feature ନଥାଏ, କେବଳ neuroglial cells are formed to provide nourishment, insulation and protection to the neurons without forming any type of other impulse conduction. Impulse conduction ର କାମ ଆମର neurons କରିବ. impulse conduction ର କାମ ଆମ ନ୍ୟୁରନ୍ କରିବ. ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିଆଲ ସେଲ୍ସ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ତାହେଲେ CNS ଆଉ PNS ପାଇଁ ବୋଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ. It is different for central nervous system and peripheral nervous system. So how is it different? How is it different? देखो देखो कौन कौन अच्छे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भितर न्यूरोग्लियल सेल्स गुड़ाक एपेंडाइमल सेल्स जोटा की helps in the formation of cerebrospinal fluid ठीक तापरे आ गोटे सेल अछि कोन astrocytes हला helps in forming the blood brain barrier हला तापर आ गोटे अछि microglial cells. These are known as the macrophages of the brain. And finally the oligodendrocytes which help in the formation of myelin sheath. myelin sheath ठीक अछि. अच्छा एबे आसो नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे दी प्रकार सेल अछि, स्पेसिफिकली गोटे हला सैटेलाइट सेल. ये नरिशमेंट रे हेल्प करे एंड प्रोटेक्शन रे
नरिशमेंट ऑफ प्रोटेक्शन रे हेल्प करे आउ स्क्वान सेल्स जोटा कि एइडारे पीएनएस रे फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ रे हेल्प करे helps in the formation of myelin sheath कोडा सेडा होची स्क्वान सेल्स हैला स्क्वान सेल्स फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ स्क्वान सेल करूची का कोठी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रे फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे के करूची ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी बात थर्ड the myelin sheath present around axons in the peripheral nervous system is formed primarily by देखो ऐसे वाला से क्वेश्चन है ऐसे वाला से क्वेश्चन astrocytes regulating extracellular ionic concentration squam cell wrapping concentrically around nerve fibers microglial phagocytes derived from mesodermal lineage ependymal cells lining the ventricles of the brain yes ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆମ ଆଡେ ବର୍ଷା ହଉଛି ହଁ ଆମ ଆଡେ ବି ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏଇଠି ବି ବର୍ଷା ହଉଛି it will be B ହେଲା squam cells wrapping concentrically around the nerve fibers जोड़ा कि ଆମର peripheral nervous system बा PNS रे देखिବାକୁ मिलुଛି ହେଲା बाकी astrocytes କଥା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଆମ blood brain barrier ରେ form को help माने form करिया help କରୁଛି central nervous system रे present ଅଛି microglial cells phagocytes derived from the mesodermal lineage yes these are the maxi में बोलते हैं मानो को macrophages of the brain बोली कुआ गला macrophages of brain बोली कुआ गला है ना और ependymal cells lining the ventricles of the brain which help in the formation of cerebrospinal fluid है ना cerebrospinal fluid next one 4 saltatory conduction of the nerve impulses in the myelinated nerve fibers occurs because neurotransmitters diffuse rapidly through the exoplasm continuously depolarization takes place only at synaptic terminal of neurons action potential jump from one node of Ranvier to another node. Potassium ions enter uniformly throughout the entire myelin sheath. Answer will be C. Action potentials jump from one node of Ranvier to another node. ହେଲା one node of Ranvier to another node. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁରନ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ନ୍ୟୁରନ୍ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ये ହେଲା axon terminal ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ଉପରେ ଆମର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଇଲିନ sheath ଗୁଡାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାଇଲିନ sheath ଗୁଡା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉଛି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ନା discontinuously ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉଛି ହେଲା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥାଉଛି कंटिन्यूस प्रेजेंस रहिले से पूरा माइलिनेटेड फुल्ली माइलिनेटेड नर्व फाइबर ହେଇଯିବ ଯୋଉଟାରେ କି कंडक्शन ଟା ଟିକେ स्लो ହେଇଯିବ ଏଇରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଲିନ sheath ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମାଇଲିନ sheath ହେଲା जो जो जगह माइलिन sheath ନାହିଁ ସେଇଟା କୁହାଗଲା nodes of Ranvier ହେଲା nodes of Ranvier ବୋଲି କୁହାଗଲା अच्छा तो ये ଗୋଟେ node of Ranvier ଆଉ ଗୋଟେ node ଏମିତି ये जो कंडक्शन ଟା କରୁଛି एमती ये जो कंडक्शन होची मोर इंपल्सेस रो एरा हमर टिके फास्टर कंडक्शन होची ए कंडक्शन ना हमर टिके फास्टर कंडक्शन आ एडा को ही हमर सॉल्टेटरी कंडक्शन बोली कहा जाउची सॉल्टेटरी कंडक्शन बोली कहा जाउची हैला हां ऑप्शन नंबर सी हिज करेक्ट आंसर 5
Which category of neuron is predominantly associated with the retina of eye and olfactory epithelium? Bipolar neuron possessing one axon and one dendrite, multipolar neuron with numerous dendritic branches, pseudo-unipolar neuron present in the dorsal root of ganglia, commissural neuron connecting the cerebral hemispheres. कौन होगा? Yes, it's A. It's A. ହେଲା bipolar neuron. अच्छा कौन कौन अच्छी यार फीचर bipolar neuron रे one axon and one dendrite. कोड़ी कोड़ी अच्छी retina of eye और olfactory epithelium. ହେଲା एक retina of eye olfactory epithelium माने nose रे ହେଲା ସେଇଠି मतलब present ଅଛି. Multipolar neuron with numerous dendritic branches ସେଇଟା ଆମର all over the body ये present ଅଛି. ठीक pseudo unipolar neuron present in the dorsal root of ganglia. Pseudo unipolar neuron ଟା ହଉଛି A type ର ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେଲ୍ ବଡି ର ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହିଁ ବାହାରି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟା ବାହାରିକି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଦିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ it appears to be pseudo unipolar it appears to be unipolar it is it appears to be ମାନେ bipolar ହେଲା but it is actually unipolar ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଟାକୁ pseudo unipolar ବୋଲି କୁହାଗଲା କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା dorsal root of ganglia ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି commissural neuron जोटा कि हम cerebral hemispheres को कनेक्ट करछंती हैला callosum पाखरे प्रेजेंट थांती आ यूनिपोलर न्यूरॉन बोली कहले केवल गोटे ही ब्रांच थिबो जोड़ा रे हैला केवल एडी गोटे ही ब्रांच बाहर गिरी थिबो आ एडा कोडी प्रेजेंट अछि बोली कहले एडा कोडी प्रेजेंट अछि these are present in the embryonic stages रे देखियो मिलुची unipolar neurons done question number 6 during the resting state of a neuron the inner side of the axonal membrane becomes negatively charged mainly due to during the resting state of the neuron the inner side of the axonal membrane becomes negatively charged mainly due to active influx of the calcium ion into the exoplasm continuously higher concentration of sodium ion inside the neuronal membrane differential distribution of ions maintained by sodium potassium pumps sudden opening of the voltage gated chloride channel exclusively yes एटा हमर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल ला मेंटेन ही रहउची हमर किछ ए टाइप रो मेंटेन ही के थाए ये ला मल्टीपोलर न्यूरॉन ये ला एक्सॉन टर्मिनल तार हैला भीतर चार्ज टा हमर नेगेटिव थाए और बाहरी चार्ज टा पॉजिटिव थाए ए स्टेट टा को कहा जाए as polarized न्यूरॉन या फिर resting membrane potential है ना resting membrane potential बोली कहा गला अच्छा एटा कम पई होउची बिकॉज़ हमरा गोटे सोडियम पोटेशियम पंप चलची से सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा 3 sodium out and 2 potassium in दीटा तीनटा सोडियम बाहर को वाला को दीटा पोटेशियम भीतर को आसुची तो या द्वारा होची कोन ना बाहर पोटेशियम रो कंसंट्रेशन अधिक है बाजू पॉजिटिविटी टा अधिक थाउची आ भीतर पोटेशियम कम थी बाजू हैला भीतर टिके
पॉजिटिविटी कम था, इट इज नॉट नेगेटिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी क्लोराइड आयंस कि हमर से जो पॉजिटिव आयंस गुड़ा प्रेजेंट नहीं बोली हमर से नेगेटिव नहंती बिकॉज द पॉजिटिव आयन द अमाउंट जोड़ा जति कि हमर प्रेजेंट रहबा कथा सेति सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट न रहबा जोगु भीतर चार्ज टा मोर नेगेटिव हो जाउछ हैला भीतर चार्ज टा मोर नेगेटिव हो जाउछ आउ द मोस्ट abundant intracellular ion will be कौन हम पोटेशियम कहीं पोटेशियम कहीं ना गोटे तो सोडियम पोटेशियम पंप भितर हमर सोडियम बाहर जाउतला आ पोटेशियम भितर को आसला एटा गोटे रीजन आ गोटे रीजन कम भाई why तो सोडियम पोटेशियम पंप रे हमर दीटा पोटेशियम भितर को रहउतला सेति पे बोली भितर चार्ज हमर पोटेशियम रिच हे गरे थाउची आ गोटे रीजन कोन पोटेशियम पई बोली the membrane is impermeable permeable not है membrane टा एरा होची गोटे रीजन तो सेति पे बोली हमर भीतर चार्ज टा इंट्रासेल्युलर आयन हमर पोटेशियम रिच ठीक अछि आ एरा होची रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज्ड न्यूरॉन जोडा रे कि हमर भीतर चार्ज टा नेगेटिव और बाहर चार्ज टा पॉजिटिव तबरे डीपोलराइजेशन केतले भाबो डीपोलराइजेशन केतले हबो जते बेले कोनोसी गोटे हमर इंपल्स जनरेशन हेबा जोगो मोर जदि चार्ज टा उल्टा हे जबो माने बाहर चार्ज टा नेगेटिव आसीबो आ भीतर चार्ज टा पॉजिटिव आसीबो ताहले हमें कहूचे कि एडी मोर चार्ज रो शिफ्ट हेबा जोगो ड्यू टू द shifting of charge inside and outside the neuron this is known as this stage is said to be depolarized तो एडी डीपोलराइजेशन हे गला त माने एक्साइटेशन हे गला से इंपल्सेस को कैरी करबा आरंभ कर देला इंपल्सेस को कैरी करबा आरंभ कर देला ए स्टेज टा को डीपोलराइज्ड स्टेट बोली कहा जाउछ आ डीपोलराइज्ड स्टेट रे हमर भीतर चार्ज टा पॉजिटिव केमे दे होची द भीतर चार्ज टा पॉजिटिव होची ड्यू टू द इनफ्लक्स of sodium ions बाहर सोडियम आयन सब अधिक थाउची भीतर सोडियम आयन कम थाउची बाहर सोडियम आयन भीतर को जदी पळे आसी ताले हमर डीपोलराइजेशन हो आरंभ हे गेला ठीक प्रणाम सनातन नेक्स्ट तो एबे इडी कहलो कम पई हबो because of the differential distribution of the ions maintained by the sodium potassium pumps सेति में बोली हमर मेम्ब्रेन रो चार्ज टा ए टाइप रो उल्टा हेगरी थाउची बा एमिदी टाइप रो मेंटेन हेगरी रहउची Question number 7. Astrocytes perform an important supportive role in the central nervous system because they produce cerebrospinal fluid inside the ventricular cavities, remove pathogens by extensive phagocytic metabolic support, form the sensory ganglia associated with spinal nerves directly, out from sensory ganglia associated with spinal nerve directly. Maintain the blood-brain barrier and provide the metabolic support. Remove pathogens by extensive phagocytic activity exclusively. Produce cerebrospinal fluid inside the ventricular cavities. कौन होगा? Yes, it will be C. है it will be C. Astrocytes गुड़ा हम blood brain barrier form कोशते और provide कोशते metabolic support. हमारा brain और blood भी तरी ये हमारा है हमारा brain है ना और ये हमारा blood vessel
ब्लड वेसल भितर आम गुड़ाए प्रकार टॉक्सिन्स था जोटा कि डायरेक्टली आम ब्रेन पाखु रिएश्योर करके सेंड करिपरिबा नाही हैला। तो से केस रे कोन होउची देयर आर सर्टेन सेल्स जोटा कि स्टार शेप्ड सेल्स गुडा ये एस्ट्रोसाइट्स गुडा स्टार शेप्ड सेल्स गुडा जोटा कि गोटे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बा फिल्ट्रेशन लेयर भले काम रे आछुंते आ से माने एठू एठी जिबारे एठू एठी जिबारे एठू जिबारे ए काम रे आछुंते हैला। फ्रेश ब्लड गुडा को ट्रांसफर हे परिबो। Question number 8. At a chemical synapse, transmission of an impulse from one neuron to another occurs through direct continuity of of cytoplasm between the adjacent neurons, release of neurotransmitter into the synaptic cleft, mechanical displacement of the presynaptic membrane, passive movement of myelin between the two axons. Yes. Chemical synapse को पचारछि तो एडी हमर न्यूरोट्रांसमिटर्स रो रिलीज हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट रे न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट रे। तो एडार जदि आमे देखिबा आउ गोटे टाइप रो ट्रांसमिशन अछि आउ गोटे टाइप रो ट्रांसमिशन अछि ताको कहला गला कोन ना इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन of impulses है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कौन होची ना ये है गोटे न्यूरॉन ये है तार एक्सॉन टर्मिनल ये है तार पछरे आ गोटे न्यूरॉन है से माने कौन करिवे ना आर हमर जो एरा है आर डेंड्राइट्स रो आर एक्सॉन टर्मिनल संगे आर डेंड्राइट रो आर एक्सॉन टर्मिनल संगे गोटे कनेक्शन था जोटा को कि गैप जंक्शन बोली कहा जाउची है ना गैप जंक्शन बोली कहा जाउची एडा हमर टिके फास्टर कंडक्शन दिस इज अ फास्टर कंडक्शन है ना काहे कि एडा हमर डायरेक्ट ट्रांसफर हे जाउची डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स तो एडा हमर फास्टर कंडक्शन ठीक है एडा होची हमर फास्टर कंडक्शन किंतु किंतु हमर जो रहउची केमिकल सिनेप्स सेटा कौन होची ना ये है न्यूरॉन ये है तार नर्व एंडिंग एक्सॉन टर्मिनल तापर ये है आ गोटे न्यूरॉन ये है एक्सॉन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल है ये कौन करबा हमर सिनेप्टिक क्लेफ्ट थाउची सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्टिक वेसिकल्स थाउची तापर से एक्सोसाइटोसिस करिगिरी ए जो सब तार सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर गुडा एडी रिलीज करछि सिनेप्स रे जोड़ा कि ये नाउन होछि ता ट्रांसमिट करछि इम्पल्स ए टाइप रा हम इम्पल्स ट्रांसमिशन होछि को केस रे दिस इज केमिकल ट्रांसमिशन of impulses chemical transmission of impulses आउ ए केस रे हमर कोन होछि it is comparatively slower conduction okay आउ ए डायरे there is the transfer of impulse occurs through the neurotransmitters next question 8 ये 8 थिला ये 9 which of the following event occur first during generation of an action potential in a neuron outward diffusion of the potassium ion causing repolarization hyperpolarization due to excessive potassium permeability opening of the voltage gated sodium channel causing depolarization complete inactivation of the sodium potassium ATPase molecules को इवेंट फर्स्ट रे हबो जतबे एक्शन पोटेंशियल दा हमर जनरेट हबो को इवेंट ता
हब फर्स्ट जेतेबेले हमर एक्शन पोटेंशियल हब बोली हमको जाना पड़छ yes the answer will be answer will be C हैला आंसर विल बी सी केमिति होची ना हमर एक्शन पोटेंशियल जो बाहर रहउची पॉजिटिव और भीतर रहउची नेगेटिव बाहर सोडियम आयन गुड़ा बहुत अधिक मात्रा रे प्रेजेंट तो जेतेबेले डीपोलराइजेशन होची बोली कहले बाहर एटा नेगेटिव हो जाउची और भीतर एटा पॉजिटिव हो जाउची एटा को ही तो ए स्टेट टा को डीपोलराइजेशन बोली कहा जाउची डीपोलराइजेशन बोली कहा जाउची हैला और ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन होची बोली कहउची हैला ए स्टेट रे ही हमर एक्साइटेशन होची बोली कहउची बायोलॉजी रे फुल टू फुल मार्क आछी कोथरे फुल टू फुल आछी दीपक को एग्जाम रे फुल टू फुल आछी देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 microglial cells from the central nervous system are functionally important because because they form insulation myelin layer around the peripheral axons, secrete neurotransmitters at interneuronal synapses, act as macrophage-like scavenger cell during the infections and injury, generate electrical impulses coordinating the voluntary movements. Microglial cells कथा कहैछि और microglial cell टा कोन this is one type of neurotransmitter. It is one type of neurotransmitter लिखुछि neuroglial cell. It is a type of neuroglial cell. कोडारे अछि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे प्रेजेंट अछि जोडा कि हमर मैक्रोफेज बोले स्कैवेंजर सेल्स रे काम करूछि कौन से प्रकार जदि पैथोजन हे गला किछि इन्फेक्शन हे गला किछि डिजीज ऑर्गेनिज्म हे गला डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हे गला से माने जदि एंटर करूचंदी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताले से ताको एनगल्फ कर दो हला आ मैक्रोफेज लाइक स्कैवेंजर सेल्स बोली कहले these are highly phagocytic done. Question number 11. The refractory period of a neuron refers to the condition in which the neuron permanently loses its ability to conduct impulses. Axonal transport of protein becomes completely absent. A second action potential cannot be generated immediately. Neurotransmitter synthesis increases beyond normal physiological limits. NEET रे जदि फुल मार्क आछि ताले मते तुमको दीपक प्रॉपर रिवीजन करियो पड़िबो बिकॉज़ लास्ट थर जो NEET हेतिला मे 3 रे जो NEET हेतिला the level of questions that it had हला बहुत बेसिक लेवल रे क्वेश्चन थिला तो सदी भाई बोले यू नेवर नो कि ए रीनीट एग्जाम रे केमिदिया क्वेश्चन पकेबो so it is better to properly revise करिगिरी जेबाडा बेटर हबो तम भाई फुल मार्क आछि त माने तम बेसिक क्लियर अछि हला तम बेसिक क्लियर अछि बेसिक क्लियर करिगिरी तम एबे टिके एडवांस लेवल रे क्वेश्चन सॉल्व करी आरंभ करो ठीक है स्टेटमेंट लेवल रो किछ असर्शन रीजन लेवल रो ए टाइप रो किछ क्वेश्चन सॉल्व करी आरंभ करो इट विल बी बेटर है ना लेवेंडर डी पायल रिफ्रैक्टरी पीरियड कथा पचाइछि रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कहले आमे कहूचे कि ए हला गोटे न्यूरॉन ए गोटे न्यूरॉन रो आगुडी न्यूरॉन को ट्रांसमिट करछि गोटे न्यूरॉन रो आगुडी न्यूरॉन को ट्रांसमिट करछि हमरे इम्पल्स ट्रांसमिट करछि हला किंतु गोटे पर गोटे टिके गोटे सेगमेंट पर मध्ये हमर इम्पल्स रे ट्रांसमिशन एडु ट्रांसमिशन हला बेडो कौन होची ना इमीडिएटली पुणी आ गोटे रिस्पांस बा इमीडिएटली पुणी आ गोटे इम्पल्स जनरेट कर परिबनी हैला संगे संगे पुणी आ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर परिबनी आमे को कि संगे संगे इन द सेंस कि माने विदिन अ मिली सेकेंड्स कथा हैला मिली सेकेंड्स कथा रे मध्ये से संगे संगे हमर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर परिबनी मे बी किछरा मिली सेकेंड्स पर करबो किछरा सेकेंड्स पर करि पारि हैला
तो से केस रे हमर सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड इमीडिएटली से पीरियड से पीरियड टाको से जो टाइम पीरियड टाको हमर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कुहा जाउछ हला सेम टाइम पीरियड टाको हमर रिफ्रैक्टरी पीरियड बोली कुहा जाउछ ठीक अछि then this is the period during which no other impulse a period रे no other impulse can be generated can be generated एगला question number 12 multipolar neuron are most abundantly found in sensory ganglia of spinal nerve containing pseudounipolar neuron central nervous system where motor neuron possess many dendrites olfactory epithelium associated with specialized receptor cells vestibulocochlear pathways containing bipolar sensory neurons कहाँ question number 12 yes, Abhipsha. Non-responding stage of the muscle and the neuron. Non-responding stage of the muscle and the neuron. Good. Um, hmm. Solve the hard questions. हाँ हाँ हमें further आगू जो sessions गुड़ाक we will be trying to solve the questions जोड़ा कि हमारा रोची कौन एनसीईआरटी लेवल रे तो रहिबो टिके आमे आउट ऑफ द एनसीईआरटी आउट ऑफ द बॉक्स जाइबी असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग बेस्ड ए टाइप ऑफ क्वेश्चंस गुड़ा को सॉल्व करिबो है ना ए टाइप ऑफ क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व करिबो त एबे फर्स्ट एटा कर दियो मल्टीपोलर न्यूरॉन जोड़े रे कि हमर मल्टीपल डेंड्राइट्स गुड़ा को थाउची गोटे एक्सॉन थाउची हैला मल्टीपल डेंड्राइट्स थाउची गोटे एक्सॉन थाउची सेटा हमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर द मोटर न्यूरॉन पोजेस मेनी डेंड्राइट्स एटा इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी ठीक सेंसरी सेंसरी सॉरी सेंसरी कोची बाइपोलर न्यूरॉन कोडी अछि बाइपोलर न्यूरॉन कोडी अछि हमर retina of eye and olfactory epithelium retina of eye and olfactory epithelium आउ अछि कोन बाइपोलर हि होला हैला बाइपोलर हि होला तबरे आसे यूनिपोलर न्यूरॉन कोडी अछि ना हमर एम्ब्रियोनिक स्टेज रे फाउंड आउ pseudo unipolar neuron कोडी अछि that is present in the dorsal root of ganglia dorsal root of ganglia so these are the types of the neurons और बाकी तो multipolar neuron कथा देखिल है ना question number 13 which statement correctly explains the repolarization during the nerve impulse transmission sodium ions rapidly diffuses inward through activated channels potassium ions move outward restoring the resting membrane polarity calcium ions accumulate inside the synaptic vesicles extensively chloride ions actively enter through the ATP dependent membrane pumps ATP dependent membrane pumps हाँ विप्शा ठीक अछि वेरी गुड देखो जेतेबेले हमर नर्व इंपल्स जनरेट होची ना जेतेबेले डिपोलराइजेशन होची बोली कोजे बा इंपल्स जनरेट होची फर्स्ट तो इनिशियली हमर भीतर मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा नेगेटिव थाउची बाहर मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा पॉजिटिव थाउची why so because of the presence of more sodium ions outward बाहर हैला बाहर पटे अधिक सोडियम आयन रहइबा जोगु बाहर पट लेयर टा हमर अधिका पॉजिटिव बोली कहउचे भीतर नेगेटिव
ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଲାରାଇजेशन ହବ ତ ବାହାର सोडियम आयन गुड़ाक भितर को मूव कर आरंभ करेंगे जोटा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को उल्टा बनईदेव भितर चार्जटा पॉजिटिव हो बाहर चार्जटा नेगेटिव हो किंतु पुणी तो ए स्टेज रे माने भितर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव है अधिका टाइम पे बोली न्यूरॉन हमर कंट्रोल करी रही परिबनी हैला तो कौन हबो ना एज सून एज हमर इंपल्स टा ट्रांसफर हे गला सेते बेले संगे संगे पुणी होत जो सोडियम आयन्स गुडा इनवर्ड आसीथिबो जोडा पई कि हमर डिपोलराइजेशन है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल टा भितर रो पॉजिटिव हेतिबो संगे संगे से आउतरे बाहर को लागिबो संगे संगे से आउतरे बाहर को लागिबो आ सोडियम आयन बाहर को बाहरिबा संगे संगे जो आयन टा जो पोटेशियम आयन ना हम इंट्रासेल्युलरली सब अबेंडेंट थिला से आयन टा मध्ये एबे कोन हबो ना से आयन मध्ये एबे हमर किछिटा बाहर को लागि जिवो हैला से एक्साइटमेंट रे से जो रश रे हमर किछिटा सोडियम पोटेशियम आयन्स मध्ये हमर बाहर को लागिवो जोडा स्टेट टा कि हमर पोलराइजेशन हेबा जगह रे हाइपर पोलराइजेशन हो जाउची पोलराइजेशन रो चार्ज टा हमर -70 रहउची एक्शन पोटेंशियल रो चार्ज टा +30 रहउची किंतु हाइपर पोलराइजेशन जोडा रे कि सोडियम आयन बाहर को जीवा संगे रे पोटेशियम आयन्स मध्ये हमर बाहर को पडुचंती सेटार चार्ज टा हमर -90 मिलीवोल्ट रहउची जोडा कि ऑब्वियसली बहुत ही कम टाइम पई बोली रहउची हैला बट जेहेतु एटा हमर देखा जाउची सेति पई बोली वी विल surely consider we will surely consider this the option number 80 b is that potassium ions move outward restoring the resting membrane potential resting membrane polarity एटा हेगला ये अब हाइपर repolarization state रे repolarization state रे एटा repolarization है सोडियम आयन बाहर होची एटा repolarization हैला हैला तापरे हमर पुणी आउथरे इनवर्ड कथा होई जी एटा ठीक अछि हैना potassium ions then next question number 40 nodes of Ranvier are physiologically significant because these regions contain dense myelin preventing ionic exchange completely lack voltage gated ion channels required for conduction permit rapid ionic exchange necessary for solitary conduction store neurotransmitter vesicles before synaptic transmission nodes of Ranvier are the regions जोड़े कि myelin sheath present नहीं है ना no myelin sheath present no myelin sheath present है ना तो ये कौन बोलती it permits the rapid ionic exchange necessary for solitary conduction है ना solitary conduction ପାଇଁ ବୋଲି जो rapid ionic exchange ଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର node of Ranvier हमको provide କରି पारुଛି ଆଉ solitary conduction ନା ଆମର ଟିକେ faster conduction of faster conduction of nerve impulses faster conduction of the nerve impulses है next 15 ependymal cells lining the ventricles of the brain are mainly associated with formation of formation and circulation of the cerebrospinal fluid transmission of the sensory impulses to the cerebellum synthesis of catecholamine neurotransmitter in synapses production of connective tissue around the cranial nerves कौन होगा हाँ 120 मीटर पर सेकेंड अभिषा यस solitary conduction रे बहुत जल्दी ही जवाब ट्रांसमिशन बहुत शीघ्र हबो है it will be synthesis formation and circulation of the cerebrospinal fluid formation and circulation of the cerebrospinal fluid एइडारे हमर कोन होची ना हमर ependymal cells गुडा associated हेकि थांती also ependymal cells are the types of these are the types of again neuroglial cells of the central
nervous system, central nervous system ର ନ୍ୟୁରୋଗ୍ଲିୟର cells ଗୁଡା. Question number 16. In a polarized neuronal membrane during resting condition, the outer surface generally possesses higher negativity because potassium ion accumulate externally, positive charge due to the greater concentration of sodium ions outside, neutral charge because ions are equally distributed on both sides, excess chloride permeability causing the internal positivity. It is 16 hoji B. Positive charge due to the greater concentration of sodium ions outside. ହେଲା ବାହାର ଚାର୍ଜଟା ପଜିଟିଭ ହବ ଆଉ ବାହାରେ ଚାର୍ଜ ଆମର ପଜିଟିଭ ଏଇଥିପାଇଁ ରହୁଛି ଆଉ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ପମ୍ପ ଅଛି ସେ ତିନିଟା ସୋଡିୟମକୁ ବାହାରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଦିଟା ପୋଟାସିୟମକୁ ଭିତରକୁ ଆଣୁଛି which makes the membrane potential positive because of the presence of greater positive ions outside the membrane. Out potassium ions गुड़ाक हमर भितरे सब abundantly थांती, which makes the potassium as the most abundant intracellular ion. है ना? ठीक. Next. 17. Which neurotransmitter is commonly released at neuromuscular junction in the vertebrates? Dopamine regulating reward pathways in the cerebrum, serotonin associated with mood stabilization mechanisms, acetylcholine stimulating contraction of the skeletal muscle fibers, glycine functioning mainly within the inhibitory spinal pathways. Question number 17. Question number 17. The C. Pile, Abhipsha. Yes. Acetylcholine, जोड़ा कि हमारा stimulate कुछ contraction of the skeletal muscle fibers. Skeletal muscle fiber contraction कुछ कोरुथवार अर्थ होची. सेटा कोरुथवार अर्थ होची that एटा होची हमारा गुटे न्यूरॉन ना ये है तारा axon terminal है ना ये है skeletal muscle है ना एठी जेतेबेले हमर नर्व इंपल्सेस गुडा जनरेट हबार थिबो बा कोनोसी एक्शन डे हमर ग्रो करिया थिबो से केस रे कोन होची ना एडी न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को सब रिलीज हो जाउची एक लेफ्ट रे अब एडा को कहा जाउची कोन एडा मुई कहा जाउची एस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोली एटा को कहा जाउची पिछला और जनरली हमर से जो न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को जोड़ा रिलीज ही थाउची ना ए जो न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को रिलीज ही थाउची these are generally acetylcholine हैला next question number 18. The speed of impulse conduction is comparatively faster in the myelinated fibers because continuous depolarization occurs throughout the entire axonema. Electrical resistance across the membrane decreases uniformly. Myelin prevents ion leakage and enables node-to-node conduction. Neurotransmitters are released repeatedly along the axonal length. Myelinated fibers रे हमारा conduction टा faster रुहे comparative to the non-myelinated sheets. Because myelin जेतेबेले present थिबो ना हमारा ए axon ऊपर जेतेबेले myelin एडी present थिबो myelin present थिला बेलको हैला
माइलिन प्रेजेंट थिला बेडू आमर कौन सी प्रकार आयन रो लीकेज एडी करेबनी ऑल्सो जो जो जगह माइलिन नहीं से जगह आमर नोड्स ऑफ रैंगुलर बोली कुआ जाउची सेडी आमर नर्व इंपल्सेस गुड़ा आराम से ट्रांसफर हो जाई परबो हैला आ एडा को ही कुआ जाउची कोन ना सॉल्टेटरी कंडक्शन आ एडा आमर फास्टर इंपल्स जनरेट करूची फास्टर इंपल्स जनरेट करूची हैला तो एठी जो हमर एडा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हैला 18 ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट 19 the interneurons present within the spinal cord are primarily responsible for carrying motor impulses directly to the effector organs, connecting sensory and motor neuron during the integration, forming the myelin sheath in the peripheral nerves exclusively, transmitting impulses from muscles towards the sensory receptors. Sensory neuron होचे हमर ए प्रकार न्यूरॉन गुड़ाक सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स जोड़ा कि रिसीव करछ सिग्नल है ना ये रिसीव करछ सिग्नल है ना आ मोटर न्यूरॉन होचे से न्यूरॉन गुड़ाक जोड़ा कि जे कि माने नहीं कि जाउची सो दैट हमर माने इंपल्स गुड़ाक जाई कि गोटे जगह काम रे आसी परिबो है ना दे प्रोवाइड द रेस्पॉन्स देखेबो हैला आउ से भीतर जो न्यूरॉन गुड़ाक प्रेजेंट थाउची जोटा कि कंडक्शन को हमर मूव करे देगी जाउची आगु सेडा को कहा गला इंटरन्यूरॉन्स तो इडी ऑप्शन नंबर बी हे जबो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हे जबो करेक्ट आंसर 20 एबे आसे हाइपरपोलराइजेशन कथा Hyperpolarization of a neuronal membrane after an action potential mainly results from prolonged outward movement of potassium ions beyond the resting requirement, immediate closure of all sodium and potassium ions simultaneously, massive inward diffusion of the calcium ions throughout ligand-gated channels, complete cessation of the sodium-potassium pump activity permanently. हाइपरपोलराइजेशन बोली कहले पोलराइजेशन स्टेट आसीबा पई बोली माने पुणी भितरटा नेगेटिव बाहरटा पॉजिटिव हवा पई बोली जेतबे सोडियम आयन रिफ्लेक्स करथुबो हला सोडियम आयन रिफ्लेक्स करथुबो ता संगे हमर पोटेशियम आयन्स मध्ये रिफ्लेक्स करिबा आरंभ होइछ पोटेशियम आयन्स मध्ये रिफ्लेक्स करिबा आरंभ होइछ सेते बेले हाइपरपोलराइजेशन होचे हाइपरपोलराइजेशन रे हमर जो चैनल दा जो माने मेंटेन होची इट इज -7 -90 मिलीवोल्ट है -90 मिलीवोल्ट नॉर्मल पोलराइज स्टेट है -70 जेहेतु अधिका नेगेटिव माने अधिका चार्जेस बाहर को काढी दोछि से बेले टिके बेसी नेगेटिव हो जाउछि भितरे सेटा होछि हमर हाइपरपोलराइजेशन एटा हला ऑप्शन नंबर ए prolonged outward movement of the potassium ion beyond the resting requirement हमर -70 जाय थिला resting requirement -70 जाय थिला किंतु आमे जते बेले पोटेशियम आयन्स को मध्ये से तो बाहर को नेली पळेले सेता बेले हमर रेस्टिंग मेम्ब्रेन रो मध्ये कमी गला चार्ज टा भितरे हैला सेति पे बोली एडा हो जाउ हाइपरपोलराइजेशन क्वेश्चन नंबर 21 which of the following structure is primarily responsible for receiving the incoming signal in a typical neuron incoming signal को receive किए करिवो गोटे न्यूरॉन रे सिग्नल को रिसीव किए करूची axon terminal containing synaptic vesicles dendritic processes specialized for impulse reception myelin sheath composed of lipid rich insulating membrane axolemma surrounding the conducting region of the neuron
Hmm. It will be B. Dendrite processes specialized for impulse reception. जो dendrites गुड़ाक है ना जो dendrites गुड़ाक एमडी processes देखिए अच्छी तेरी हमारे receptors present था उची जे कौन से प्रकार हमारे neurotransmitter को receive करिया पे है ना तो एरा है एला हमारा कौन ना dendritic processes specialized for impulse reception will be the correct answer for the question number 21 है ना question number 22 in the human brain, oligodendrocytes differ from the squamous cell because oligodendrocytes form myelin sheath around the axon in the central nervous system, participate exclusively in neurotransmitter synthesis that is synapse, occur only within sensory ganglia associated with spinal nerves, produce cerebrospinal fluid inside the spinal canal directly. Question number 22. Question number 22 ଏଇଟା ଆମେ already discussion କରି ବି ସାରିଛେ oligodendrocyte ଆଉ squamous cell ର କାମ କେବଳ ଗୋଟେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକର କାମ କେବଳ ଗୋଟେ ସେଇଟା ହେଲା କଣ the formation of myelin sheath formation of myelin sheath ହେଲା ଆଉ oligodendrocyte myelin sheath ର formation କୋଉଠି କରୁଛି myelin sheath ର formation ମାନେ central nervous system ରେ କରୁଛି ଆଉ squamous cell ସେଇ myelin sheath ର formation କରୁଛି କିନ୍ତୁ peripheral nervous system ରେ କରୁଛି ହେଲା ତ how is it different from squamous cell it is different because oligodendrocyte form the myelin sheath around the axon in the central nervous system एमती ही difference थी बाकी functionally they are same question number 23 the synaptic delay observed in chemical synapse is mainly attributed to extremely rapid diffusion of the potassium ions through myelin, time required for neurotransmitter release for the receptor activation, continuous propagation of impulses along the dendritic membrane, instantaneous opening of all voltage-gated sodium channels. दी प्रकार ट्रांसमिशन थिला हमर गोटे हला केमिकल ट्रांसमिशन गोटे हला इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ना हमर टिके फास्टर होची काहेकि ना हमर गैप जंक्शंस रो प्रेजेंस जोगु हला त माने डायरेक्टली इंपल्स ट्रांसमिशन गोटे न्यूरॉन रो आउट न्यूरॉन को करि पारिबे बट व्हेन इट कम्स टू केमिकल सिनेप्स केमिकल री कि जते बेले हमर न्यूरोट्रांसमिटर रिलीज होची माने केमिकली जते बेले हमर इंपल्स ट्रांसमिशन होची जते बेले हमर न्यूरोट्रांसमिटर्स आर इन्वॉल्वड देयर हैला न्यूरोट्रांसमिटर्स आर इन्वॉल्वड देयर और न्यूरोट्रांसमिटर्स गुडाको कौन करंदी सेमानकर टिके टाइम लागि रिलीज देबा पई तापर रिसेप्टर गुडा एक्टिवेट होबा सेमाने रिसीव करिवे एक्टिवेट करिवे करिकि जते बेले सेमाने कंडक्शन कला बेले टिके टाइम लागि जाउची तो सेते टाइम बोले ऑप्शन नंबर बी इज वेरी करेक्ट आंसर time required for the neurotransmitter release and the receptor activation 24 a neuron possessing several dendrites and single long axon is classified structurally as simple acheda hela structure of the neuron upro question da bipolar neuron associated with special sensory organs unipolar neuron located with dorsal root ganglia multipolar neuron commonly found in the motor pathways afferent neuron restricted exclusively to the autonomic ganglia so it will be multipolar neuron commonly found in the motor pathways है ना multipolar neuron commonly found in the motor pathways question number 25 which event immediately follows depolarization during the propagation of nerve impulses. Sudden synthesis of neurotransmitter molecule in the exoplasm, repolarization caused by outward movement of the potassium ions, formation of additional myelin layers around the axon, permanent closure of all ion channel in the membrane. Depolarization पर संगे संगे कौन होची depolarization रो संगे संगे कौन होची repolarization बस
रिपोलराइजेशन बेले को कौन हो सोडियम आयन रो इफ्लक्स हो ता सागरे किछि किछि पोटेशियम आयन से मध्ये इफ्लक्स हो जाउची जोटा कि हमर रिपोलराइजेशन पर स्टेज ता बोली कहूची हाइपरपोलराइजेशन तो डिपोलराइजेशन तापर रिपोलराइजेशन तापर हाइपरपोलराइजेशन हैला तो जते बेले हम देखिबा ना आगे पोलराइज स्टेट रे थाउची न्यूरॉन टा से जते बेले रिसीव करछ सिग्नल तो डिपोलराइजेशन हो जाउची तार डिपोलराइजेशन तापर से रिपोलराइजेशन हो जाउची हैला तापर पुणी हाइपरपोलराइजेशन हो जाउची ठीक ए टाइप रा हम काम करछन हाइपरपोलराइजेशन हैला परे पुणी आउथरे पोलराइज स्टेट रे आसी जाउछन पुणी आउथरे पोलराइजेशन स्टेट रे आसी जाउछन क्वेश्चन नंबर 26 the white matter of the brain appears whitish because mainly because of the abundance of unmyelinated neuronal cell bodies and neuroglia blood capillary carrying oxygenated blood continuously myelinated nerve fiber containing the lipid rich sheaths synaptic junctions between the interneurons and the motor neurons because of the presence of the myelinated nerve fibers which contain lipid-rich sheaths. है lipid-rich sheaths. A grey matter जो है हमारा grey matter इधर पे हुआ वाला because of the accumulation of the cell bodies. Cell bodies गुड़ा करो accumulation ही की हमारा ये sheath गुड़ा सब form है कुछ. Question number 27. Which of the following is a characteristic feature of electrical synapse? देखो electrical synapse विषय में हमने already बहुत थोड़ा discussion करी था इसे मैं पूरा diagram बनेगी मतलब देखिए सच्ची है ना तो कौन होगा option number A neurotransmitters are essential for signal transmission synaptic cleft is extremely wide compared to chemical synapses impulses pass directly through the gap junction with minimal delay transmission always occurs in one direction only हाँ ठीक है transmission हमर सब बड़े unidirectional होची है ना unidirectional होची को केस से unidirectional होची it occurs in the case of chemical synapse है ना impulse pass directly through the gap junction with minimum delay yes एडा अब करेक्ट आंसर अब मिनिमम डिले बोली कहले एडा ही हमर इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बुझौची हैला इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बुझौची जोठी हमर कंडक्शन रेट ता बहुत अधिक थाए बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैप जंक्शन डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाए इंपल्सेस रा गोटे न्यूरॉन रो आगुटे न्यूरॉन को 28 the sodium potassium pump functioning in the neuronal membrane actively transports 3 sodium ion outward and 2 sodium ion inward 3 potassium ion outward and 2 sodium ion inward 2 sodium ion inward 3 chloride ion outward 3 sodium ion outward and 2 potassium ion inward equal number of sodium and potassium ion simultaneously एटा तो हबनी क्लोराइड आयन रो कोनसी प्रकार इन्वॉल्वमेंट रहउनी तीनटा पोटेशियम और दीटा सोडियम नथाय हैला तीनटा सोडियम मेम्ब्रेन भितरे हैला से कोन करबो तीनटा सोडियम बाहरबो आ दीटा पोटेशियम भितरबो दीटा पोटेशियम भितरबो हैला ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर ना ऑप्शन नंबर सी हे जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 रो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 which neuroglial cells are directly involved in the immune defense mechanism with the brain tissue satellite cells surrounding the neuronal cell bodies in ganglia microglial cells exhibiting phagocytic properties squamous cells producing neurolemma around the peripheral axons astrocytes regulating neurotransmitter concentrations locally ये केस रे कोन हबो ना हमर इम्यून डिफेंस बोली कहले हमर फैगोसाइटिक सेल फैगोसाइटिक सेल कथा बोली कहले एडा हमर हे जिवो माइक्रोग्लियल सेल्स जोडा कि हमर सीएनएस रिप्रेजेंट अछि सी हमर कोन को फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी करूची दे engulf the foreign pathogen
and dust particles ना dust particles को से मैंने engulf करते हैं ऑप्शन नंबर बी ही जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 in the resting neuron membrane permeability is highest for resting neuron ray membrane permeability is highest for potassium ion diffusing through leakage channels calcium ion moving through ligand gated pathways sodium ion entering through the voltage sensitive pores large negatively charged proteins passing freely outward कौन होगा potassium ions diffusing through the leakage channel will be the correct option जोड़ा लेगी हमरो membrane टा permeability देखेबाकू आमे चेष्टा करछे सेतबेले हैला potassium ions diffusing through the leakage channels question number 31 which of the following best explains the all or none principle of the nerve impulse conduction action potentials vary directly with stimulus intensity in every neuron a threshold stimulus generates a full action potential or none at all weak stimuli produce slower impulses while strong stimuli produce faster impulses. Neurotransmitter release occurs only in the sensory neurons exclusively. माने हमर गोटे स्टिमुलस टे थाई समस्त पई बोली किछि किछि स्टिमुलस गोटे रेंज जाय काम करे गोटे एप्रोप्रिएट रेंज जाय पहुंचीला परे ही आमे कहूचे कि हमर न्यूरोट्रांसमीटर गुडा को हमर रिलीज हैला गोटे रेंज जाय से पहुंचीला से रेंज जाय से हमर रीच करला परे तापरे हमर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होची जदी हमर रेंज जाय पहुंचीला ताहले तो से पूरा पूरी हमर जेमिति एक्शन पोटेंशियल देखेबा कथा पूरा प्रॉपर स्टेप रे देखेबो जेते बेले न देखौची जेते बेले हमर कोनोसी भी प्रकार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हबनी कि कोन बोली कहला हमर जो अल्पटिक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बा अल्पटिक हमर कोनोसी डिस्चार्ज हो जाउचे आयंस रो तो से केस से कोनोसी भी प्रकार रो हमर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हबनी कि एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हबनी है ना तो सेटा को ही हमर ऑल एंड नन प्रिंसिपल बताउची कि ए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट्स ए फुल एक्शन पोटेंशियल और नन एट ऑल none at all question number 32 the neurolemma surrounding the peripheral nerve fiber is formed by successive plasma membrane layer of the schwann cells, astrocytic end feet covering the neuronal synapses extensively, connective tissue originating from the meninges, ependymal cells lining the spinal canal internally. से कौड़ी पचारची जे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पचारची पेरिफेरल नर्व फाइबर्स को पचारची तो इट विल बी दी स्क्वान सेल्स को ठीक अछि स्क्वान सेल जोड़ी हला सेडी हमर पेरिफेरल नर्व फाइबर कथा उठिबो सक्सेसिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर ऑफ द स्क्वान सेल गुडा का हमर सक्सेसिवली प्रेजेंट रही लेयर बाय लेयर रही हमर ये फॉर्म कुछ 32 टा ए 33 which part of the neuron is primarily responsible for conducting impulses away from the cell body nasal granule involved in the protein synthesis, dendritic arborizations receiving synaptic inputs, axon specialized for impulse transmission, neurolemma supporting the regeneration after injury. Yes. It will be axon specialized for impulse transmission. Axon specialized for impulse transmission. सी ही तो करूची हमर गोटे न्यूरॉन रा गोटे न्यूरॉन को ट्रांसफर करया पई बोली कहली जो स्ट्रक्चर गुडा हमर रहउचंती जो स्ट्रक्चर्स गुडा हमर रहउचंती एडा को ही तो हमर एक्सॉन बोली कहवा कला है ना ये हमर ट्रांसफर करी नेगिरी जाउची हां ये हमर ट्रांसफर करी नेगी जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन
34. The neurotransmitter released into the synaptic cleft is rapidly removed mainly to prevent continuous stimulation of the postsynaptic membrane, increase the diameter of the synaptic cleft permanently, promote uncontrolled depolarization of the nearby neurons, allow inward movement of the proteins across the membrane. Synaptic cleft ଅଧିକା ସମୟ ପାଇଁ ପରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ ହେଲା they are rapidly removed. Why so? କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଏମିତି ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି so that continuity ଟା maintain ହବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରନ୍ କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଟା ପାସ୍ ହେଇକିରି ଯିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଆକ୍ସନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇକିରି ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟା ଆସିବ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି to prevent the continuous stimulation, promote uncontrolled depolarization, allow inward movement, increase the diameter of the synaptic cleft. It will be to promote the continuous stimulation of the postsynaptic membrane. है ना? एड़ा sorry to promote coaching to prevent the continuous stimulation of the postsynaptic membrane. है ना? Option number A. 35. Which statement regarding the unmyelinated nerve fiber is correct? Which statement regarding the unmyelinated nerve fiber is correct? They conduct impulses exclusively through the solitary conduction. Nodes of Ranvier are absent along the length of the axon. Schwann cells completely fail to associate with these fibers. Impulse transmission is always faster than in the myelinated fibers. In the myelinated fibers. Unmyelinated fiber कोड़ा correct ला unmyelinated रे बोली कहले हमर myelin sheath present ही नथिबो myelin sheath present ही नथिबो बोली कहले हमर सेटा रे discontinuity मते रहइबनी discontinuity मते रहइबनी myelin sheath पई बोली myelin sheath पई बोली discontinuity रहइबनी बोली कहले हमको node of Ranvier भी देखा जिबेनी node of Ranvier देखा जिबेनी बोली कहले हमर जो solitary conduction जो impulses पूरा को jump करी करी जाउतिला faster impulse generation देखौतिले सेटा मते होई परिबनी हैला ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ତ node of Ranvier are absent along the length of the axon unmyelinated ରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମକୁ correct statement ପଚାରିଛି ସିଏ ହେଲା ତ option number B they conduct impulses exclusively through the solitary conduction always ନାହିଁ ହେଲା ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ତ ଆମର solitary conduction କରୁନାହାନ୍ତି Schwann cell completely fail to associate with these fibers they never fail to associate with these fibers. Schwann cells गुड़ाक हम myelin sheath formation करोचंती peripheral nervous system रे. Impulse transmission is always faster than in myelinated fibers. है ना? Myelinated fiber रे unmyelinated fiber रे in impulse transmission faster myelinated रो ना भूल myelinated रे faster. Myelinated रे faster. ठीक अछि ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ जो ऑप्शन टा हमर दिया हला एटा हमर बेस्ट सुटेबली हमर सेट होची जो अबव क्वेश्चन पाई बोली ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 36 the threshold potential of a neuron refers to the minimum depolarization required to initiate an action potential maximum membrane polarity attained during the hyperpolarization constant voltage maintained by the sodium potassium pump potential difference generated exclusively at the synaptic terminals. हाँ बताइले ବର୍ଷା को ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଯେ ତ ଦେଖୁଥାଏ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ଦେଖି ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କିଏ ଦେବ କାହିଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳେ ମୋତେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ କର हाँ बस threshold potential बोली कहले the minimum amount of energy by the minimum amount of ଆମର जो depolarization ଦରକାର to initiate an action potential
एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट करबा पई बोली जो माने हमर दरकार थाए जित्ते कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सेटा हे गेला हमर कोन ना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement correctly describes afferent neurons? Afferent neurons. है ना? अच्छा. They transmit impulses from the central nervous system to muscles. They connect adjacent neurons within the spinal cord only. They carry sensory information from receptors towards the CNS. They form the myelin sheath around the autonomic nerve fibers. A. Okay. Yes, ma'am. Exam देवी. हाँ, सही है तो. मैंने class देखी बस तो बोले कोई exam किया तो वो बोले. कौन है बड़ा क्वेश्चन एफरेंट କଥା କହିଛି एफरेंट बोली कहले से कैरी करबा हमर सेंसर न्यूरॉन କଥା କହିଛି एक्चुअली एफरेंट बोली कहले हमर जो रिसीवर ऑर्गन रु नेकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नेकी जीव सेरा नेकी जीव एफरेंट न्यूरॉन पुणी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रु पुणी जेदार इफेक्टर ऑर्गन को माने जोडी रिस्पांस दिया जीव सेठी जो नेकी जीव जो न्यूरॉन गुडा को से सेट ऑफ न्यूरॉन्स को जाउची एफरेंट न्यूरॉन्स तो दे कैरी द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टुवर्ड्स द सीएनएस एडा ही जीव हमर कोन ना एफरेंट न्यूरॉन जोड़ा को भी हमें सेंसरी न्यूरॉन बोली मत कहउले सेंसरी न्यूरॉन्स बोली मत कहउले ठीक अछि रिसेप्टर टुवर्ड्स द सीएनएस हां ठीक अछि श्वेता नेक्स्ट 38 which ion channel opening is primarily responsible for the rising phase of an action potential. Voltage gated sodium channel permitting rapid sodium influx, leakage potassium channel allowing continuous potassium efflux, ligand gated chloride channel producing inhibitory responses, calcium pumps actively transporting calcium outward. A है ना voltage gated sodium channel permitting the rapid sodium influx. Voltage gated sodium channel रो हमर rapidly sodium ions गुडा influx हेबा जगु एडा हमर कोन होची ते permit करचंती हमर action potential generate करिया पे. Next 39 multiple sclerosis is primarily characterized by degeneration of pancreatic beta cell causing insulin deficiency, autoimmune destruction of the myelin sheath in the central nervous system, excessive secretion of dopamine from substantia nigra neurons, acute inflammation restricted only to the peripheral sensory ganglia. Good morning, Shubhransu. मल्टीपल स्क्लेरोसिस कथा जो कह जाइए एटा हूँ आमर गोटे न्यूरोनल डिजीजटा जोटा कि एसोसिएट होउछि आमर गोटे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सहित ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोली कहले निजर ही सेल्स गुड़ाक निजर ही इम्यून सेल्स निजर सेल्स को जतबेले अटैक करूछंती ततबेले आमर एटा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोली कह जाउछि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होउछि गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जोटा रे कि आमर निजर सेल ही आमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ को आमर डिस्ट्रॉय कर दोछंती हैला सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय कर दोछंती नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 Parkinson's disease mainly develops due to the progressive degeneration of the neurons producing acetylcholine within the spinal cord reflex pathways, dopamine in the substantia nigra region of the brain, serotonin from hypothalamic neurosecretory nuclei, glycine in the cerebellar white matter exclusively.
Wrong answer. It will be dopamine in the substantia nigra region of the brain. Dopamine in the substantia nigra region of the brain. Parkinson disease रे कौन होगा? एटा एथि में होची काहे कि ना हमरो जो डोपामाइन दा हैला आया जो डोपामाइन टा सेटा हमरो प्रॉपर जगह रिलीज न हे गिरी गोटे अन्य जगह रिलीज हे गला बेलो को हमर ए प्रकार किछ डिसऑर्डर देखा जाउची जोडा कि हमरो गोटे प्रकार कोन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है 41. Alzheimer's disease is commonly associated with progressive memory loss and degeneration of cortical neurons, hyperactivity of motor neuron causing severe muscle hypertrophy, autoimmune destruction of the peripheral myelin exclusively, increased cerebrospinal fluid production within the ventricles. Ma'am, B dopamine. Okay, Shweta. मैम ओयूएटी पाई की प्लीज वीडियो बनातु ओयूएटी पाई बोली ऑलरेडी वीडियो अपलोड चली बबीता है ना ओयूएटी चैनल इट इज ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड आउ प्रति चैप्टर प्रति सब्जेक्ट्स पाई बोली हमर क्लासेस होची है ना अब क्लासेस ऑलरेडी आरंभ हो गलाडी मास पूर्व है ना अब क्लासेस हमर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड सब जगह वीडियो ऑलरेडी से चैनल रे हमर अपलोडेड हेगिरे अछि सेठी के विजिट करके देखिबो ठीक कौन है लाइडी अल्जाइमर्स रे क्वेश्चन नंबर 41 गुड मॉर्निंग विश्वा इट इज एसोसिएटेड विथ अल्जाइमर्स उडा ना जनरली हमर एज रिलेटेड डिसऑर्डर हमें कौन जानिचे किछिटा सेल्स हमर एमिति अछंती जोडा कि जी नॉट स्टेज रे थांती दे नेवर डिवाइड दे नेवर डिवाइड वाला स्टेज रे जो सेल्स उडा थांती ना से भितर हमर रहिले किए से भितर रहिले हमर हार्ट सेल गोटे मसल सेल गोटे आ गोटे न्यूरॉन रो सेल गोटे तो न्यूरॉन रो सेल भितर हैला न्यूरॉन रो सेल होची हमर गोटे इमीडिएट प्रॉपर्टी से पोजेस करची जोटा रे कि हमर से सेल उडा केबे भी डिवाइड करिवेनी हैला सेल उडा केबे भी डिवाइड करिवेनी तो सेल उडा जदी डिवाइड करू ना ता माने सेल डीजेनरेट तो होची ना सेल डेथ तो होची किंतु जदी डिवीजन होनी से सेल रो ता माने हमर एज हला बेलो को सेडा अगर हमर लॉस हे जीवो से सेल गुड़ा आम सरी 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 जीव तो से सेल गुड़ा सरीबा जोगु वी आर एसोसिएटेड हमर एज रिलेटेड जते बयस बढ़ी बढ़ी जाउछ सेते बोली हमर दिमाग रो बत्ती टिके कमी 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 जाए हैला हमर मेमोरी लॉस हे कि जाए ठीक अछि तो सेति पई बोली हमर अल्जाइमर्स इज कॉमनली अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर जोडा रे कि हमर मेमोरी लॉस विथ अकम्पनी हेगिरि आसुची बिकॉज ऑफ द डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स because of the degeneration of the neurons so alzheimer disease is a age related disorder है ना ऑप्शन नंबर ए कीजिए progressive memory loss and degeneration of the cortical neurons 42 myasthenia gravis is an autoimmune disorder in which antibodies are mainly directed against dopamine receptors located in the basal ganglia pathways acetylcholine receptor present at the neuromuscular junctions voltage gated potassium channel of the sensory neurons, squamous cell membrane surrounding the peripheral nerve. Myasthenia gravis is also associated with our acetylcholine receptors. है acetylcholine receptors से कौन होची एडा मध्ये हमर गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ता जोटी कि हमर निजर सेल्स को मारिया को जाउचंती हैला निजर सेल्स ही हमर अगेंस्ट हे जाउचंती हमर कोनसी भी प्रकार डिजीज पाइन बोली माने कोनसी प्रकार मध्ये हमर सेल पाइन बोली तो ए केस रे जो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा था हमर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे सेइटा रे हमर एंटीबॉडीज उडा ता अगेंस्ट काम करि जाय हैला एंटीबॉडीज उडा ता अगेंस्ट काम करि जाय ता माने मोर एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा जते बेले पड़ी थांता एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा जते बेले हमर प्रॉपर्ली प्रेजेंट थांता सेते बेले हमर न्यूरोट्रांसमीटर्स उडा हैला न्यूरोट्रांसमीटर्स उडा आसीगिरी हमर एडी एसिटिलकोलिन उडा आसीगिरी बाइंड करथांते हैला एसिटिलकोलिन उडा आसीगिरी बाइंड करथांते और किसी तरह फंक्शनिंग करथांते किंतु एडा केस कोन होची ना हमर से जो एंटीबॉडीज उडा आसुची आउ ए एसिटिलकोलिन रिसेप्टर उडा ऊपर अटैक कर दोची रिसेप्टर उडा ऊपर अटैक कर दोची जा द्वारा कि एसिटिलकोलिन बॉडी रे रिलीज हेले मध्य
से रिसेप्टर सहित बाइंड हेले से लाइगैंड आउ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करिले सिना सेटा फंक्शनिंग दा करिवो बट एडी जेतु एंटीबॉडीज रो फॉर्मेशन हेबा जोगु से रिसेप्टर गुडा मरि जाउछंदी सेति में बोली हमर आउ एमाने आउ फंक्शनिंग करि पारना तो माइस्थेनिया ग्रेविस मते गोटे प्रकार ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टा जोडी कि जो एंटीबॉडी गुडा मरुछंदी मते काहे कि मरुछंदी बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्स बिकॉज ऑफ आवर ओन इम्यून सेल्स इन आवर बॉडी जोडा कि जते बेले म्यूटेशन किछि हे जाउची से केस रे होउची ना ए टाइप ऑफ कंडीशन हमर अराइज होउची हैला एटा बी हबो श्वेता बी हबो श्वेता 43 which of the following neurological disorder is characterized by recurrent episodes of the uncontrolled electrical activity in the brain हाँ एटा कौन है कहल cerebral palsy epilepsy neuralgia आउ neuralgia आउ एटा कौन है meningitis neurological disorder characterized by recurrent episode of the uncontrolled electrical activity in the brain चाली थी बस electrical activity hyperactivity रहिबो hyperactivity रो condition रहिबो है ना it will be zoology is easy we have zoology queen अच्छा अच्छा ताले आउ सब्जेक्ट कौन होची आउ सब्जेक्ट खाली zoology रे तो बेड़ा पार हबनी ना श्वेता zoology रे तो बेड़ा पार हबनी कौन हबो एडा हला हमर एपिलेप्सी एपिलेप्सी रे कौन होची ना बारंबार बारंबार जेहेतु इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुडा ना बहुत जोरे ट्रांसमिशन होची हला बहुत जोरे ट्रांसमिशन होची ठीक अछि इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल बोली कहले हमर जो एक्सॉन टर्मिनल रु डेंड्राइट्स मानको एक्सॉन टर्मिनल रु डेंड्राइट्स मानको हमर जो सिग्नल दा आसुची एडु जो सिग्नल दा आसुची से हमर डायरेक्टली गैप जंक्शन थ्रू रे आसुची गैप जंक्शन थ्रू रे आसुची अब से गैप जंक्शन थ्रू रे हमर रैपिड इनफ्लक्स होता है हैला रैपिड इनफ्लक्स होता है हमर प्रतिटी हमर माने ट्रांसमिशन सब प्रतिटी हमर कोन ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस बहुत जल्दी होता है आ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जते बेले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जते बेले ब्रेन रे बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे रही जाए तो तते बेले हमर रिस्पांस ता दरकार रो अधिक ही जाए हैला तो दरकार अधिक हबो बोली कहले वी विल बी माने कनेक्टेड विथ we will be connected with माने कोन बहुत जल्दी जल्दी हम रिस्पांस क्रिएट हबो तो जो अननेसेसरी रिस्पांस गुडा हम हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो देखा जाय परिबो हैला सेडा हम एपिलेप्सी रे देखा जाउछ हैला एपिलेप्सी रे देखा जाउछ नेक्स्ट 44 meningitis refers to the inflammation affecting the myelin sheath around the peripheral nerve neuron of the cerebral cortex exclusively protective membrane covering the brain and the spinal cord neuroglial cells lining the cerebral ventricles कौन हबो गुड मॉर्निंग प्रिया गुड मॉर्निंग प्रिया रंजन मैम रागी लेकिन ना ना रागी नहीं श्वेता मजा करछे मैं जूलॉजी इजी कहलो ना मु कहले कि जूलॉजी रे खाली थोड़ी बेड़ा पार हबो तो आउडा मते इजी हेबा दरकार ना मनस्मिता सी just a minute ठीक protective membrane covering the brain and the spinal cord माने हमर जो ड्यूरा मैटर arachnoid matter pia matter हैला एवडा को सब जो लेयर्स गुडा को अछि जो माने कि हमें मेनिंजेस बोली कहूचे से मेनिंजेस गुडा कर जते बेले कोन से इन्फेक्शन है कि इन्फ्लेमेशन है जिवो से केस रे हमर मेनिंजाइटिस होची बोली कहबा हैला मेनिंजाइटिस होची बोली कहबा नेक्स्ट चला 45 हैला Bell's palsy mainly involves the dysfunction of the optic nerve controlling the visual impulses, facial nerve supplying the muscles of facial expression, vestibulocochlear nerve regulating equilibrium, glossopharyngeal nerve associated with swallowing. कौन होगा Bell's palsy?
You have B, Shweta. Facial nerve supplying muscles of facial expression. है देखो facial nerve supplying muscle of facial expression बेस palsy सेरा हमर associated है facial expression सहित facial muscles सहित है देखिबो जन जनकर facial muscles गुडाको जदी हमर improperly form हितबो ताले expression देबारे हैला कि कोनसी प्रकार facial activity देखा देबारे मते हैला सेरा रे हमर problem होता है ना सेरा रे problem होता है आ जतबे facial muscles गुडाको हम properly develop भी हे नथिबो ना फेशियल मसल्स गुड़ा प्रॉपर्ली डेवलप भी न थिबो ना सेते बेले हमर कोनसी ना कोनसी डेफिशिएंसी बा डिसऑर्डर बा डिसफंक्शन किछ ना किछ देखा जिवो जोडा रोगी गोटे कॉमन एग्जांपल हमें कहि परबे ऑब्वियसली बेल्स पाल्सी तो होई न थाए बेल्स पाल्सी रा गोटे एक्सट्रीम स्टेट ता किंतु किंतु जो नॉर्मल नॉर्मल हमर जिंस जो डिंपल पड़ी जोडा कि पिला माने क्यूट बोली कहंदी बट एडा हमर किछि क्यूटनेस रो किछि सिंबल न थाए कि कोनसी प्रकार हमर मैंने कौन कहलो क्यूटनेस या फिर ये सुंदर रो ये किसी सिग्नल न थाए हैला अच्छा तो कौन होची हमरो फेशियल डिंपल होची एथि माइन काहेकि ना माने फेशियल मसल्स गुडा प्रॉपर्ली डेवलप हैला फेशियल मसल्स गुडा प्रॉपर्ली डेवलप ही न थाए सेहि माइन बोली डिसऑर्डर गुडा बा डेफिशिएंसी गुडा बा कोन ना कोन डिफॉर्मिटी ही थाए हैला जेतले एक्सट्रीम स्टेट रे ही जाउची सेटा को बेल्स पाल्सी बोली कहै जाउची Question number 46. Huntington's disease is a hereditary neurological disorder mainly associated with uncontrolled jerky body movements and cognitive decline, complete demyelination of spinal sensory neurons, inflammation of meninges caused by bacterial infection, failure of impulse transmission at the neuromuscular junction. मैम आम बॉय समस्त टिके नेम डा अलग भाबंदी तमे बॉय डा तम ना श्वेता it will be uncontrolled jerky movements and the cognitive decline. Uncontrolled jerky movement and cognitive decline. Huntington disease होची हमर hereditary neurological disorder ता जोड़ा कि हमर body movement ता uncontrolled way रे होची body movement ता unnecessary जेतबे रहइबो सेटा हमर Huntington disease cause करेबो आ neurological disease बोली कहले एटा हमर neuromuscular junction रे कोनसे कोनसे प्रॉब्लम कॉज करिथिबो सेहि में बोली ए जिंसरा कॉज होची तो एटा जनरली हमर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज रे प्रॉब्लम ही थाई पारे न्यूरोट्रांसमीटर जाएगी तार रिसेप्टर रे बसिबारे प्रॉब्लम ही थाई पारे या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रॉपर्ली रिलीज तार डेफिशिएंसी जोगु बा एति कि हमर सेति थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मेंटेन करिला भलिया सेति कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मेंटेन करला भलिया जदी रिलीज होउनी neurotransmitters ताहले हमें कोचे कोन ना इट इज हंटिंगटन्स डिजीज एटा रे हमर बॉडी मूवमेंट जर्की बॉडी मूवमेंट अधिक एक्साइटेटरी बॉडी मूवमेंट आउ कॉग्निटिव डिक्लाइन रोच नेक्स्ट 47 which neurotransmitter deficiency is strongly linked with Parkinson's disease histamine dopamine acetylcholine glutamine at disease हमें एरा को कथा ही जाई ऑलरेडी your name is Pupun okay it will be dopamine हैला पार्किंसंस डिजीज होची मध्ये हमर से न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ता जोरा हम देखिथिले न्यूरोट्रांसमीटर रो जो रिसेप्टर्स उडागो माने सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर उडागो जदी प्रॉपर्ली हमर रिलीज न होची ताहले हमर पार्किंसंस डिजीज कॉज हे परियो हैला पार्किंसंस डिजीज कॉज हे परियो इट विल बी आंसर विल बी dopamine 48 the region of the brain responsible for the regulation of hunger thirst and body temperature is cerebellum coordinating the muscular activity and posture, hypothalamus maintaining the internal homeostasis, medulla oblongata regulating the cardiac rhythm only, corpus callosum connecting the cerebral hemispheres. कौन होगा?
ये क्वेश्चन अभी फार्मा रे आस्ती ना अच्छा एटा ऑलरेडी मतलब हमें डिस्कस भी करी दिले ऑलरेडी हमें अन्य क्लासेस रे मध्ये ए पार्किंसंस डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस ए ऊपर सब डिस्कशन करी थे 48 टा बी हाइपोथैलेमस मेंटेनिंग द इंटरनल बॉडी होमियोस्टैसिस है ना बॉडी होमियोस्टैसिस मेंटेन करिवार काम हे गेला हाइपोथैलेमस रो सेरेबेलम हमर पोस्चर एंड बैलेंस एडा को मेंटेन करूची हैला आउ बाकी आउ कोन मेड्यूला ऑब्लोंगोटा है ना मेड्यूला ऑब्लोंगोटा जदी कहबा सी हमर कोन मेंटेन करूची सब प्रकार इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज सब प्रकार रो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज गुडा को बॉडी रो से कंट्रोल करला जेमिति कि ब्रीदिंग हे गला रेस्पिरेशन हे गला गुडा को सब ठीक नेक्स्ट 49 which part of the human brain is primarily associated with the maintenance of the body balance and precision of the voluntary movements just कहि देली ना just कहि देली thalamus acting as the sensory relay station thalamus sensory relay बड़ा काम करूची सत बाकी it is not associated with our body balance and the precision of our voluntary movements cerebrum controlling higher mental functions ठीक अछि cerebrum हमर higher mental functions intelligence हे गेला IQ हे गेला memory हे गेला ए सब जिन हम cerebrum control करूची जोटा कि होची गोटे हमर मेजर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन बट एटा हमर कोनोसी भी वे रे बॉडी बैलेंस सहित हमर कनेक्टेड न थाए cerebellum coordinating the muscular activity okay pons regulating the respiratory rhythm directly नहीं है ना cerebellum जोटा कि हमर posture और balance को maintain करूची posture and balance को ये हमर रेगुलेट करूची posture and balance को रेगुलेट करूची 50 the largest portion of the human brain responsible for intelligence memory and reasoning is the midbrain containing corpora quadrigemina cerebrum composed of two cerebral hemispheres cerebellum situated beneath the occipital lobes brainstem connecting the brain and the spinal cord kon hobo the largest portion of the human brain just discussion kari bi dele ha कही भी देली आंसर टा हमरो largest portion of the human brain जोटा कि first portion टा हला forebrain फर्स्ट क्वेश्चन टा हला फोर ब्रेन और से फोर ब्रेन रो मध्ये सेरा होची सब लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन से लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन भीतर पुनी तार लार्जेस्ट पार्ट टा हेगला सेरेब्रम सेटा रे हमर सब जिंस हम जति भी सब बॉडीली एक्टिविटीज रे हमर इंटेलिजेंस कथा रहिला या फिर मेमोरी कथा रहिला आईक्यू कथा रहिला सेंस हेबा कथा रहिला कि हमें कोन सेंस करि परचे ठीक भूल जानि परचे केते दूर इनफॉरमेशन को हमें गेन करके ग्रैब करके से नॉलेज टा को हम रिस्टोर कर रखि परचे आ पुनी सेटा जते बेले दरकार पड़ुची सेटा को पुनी हमें सेटा को इंप्लीमेंट करि परचे सेही जिंसडा होची हमर सेरेब्रम कंट्रोल करूची है ना राधे राधे देविका सेही जिंसडा हमर सेरेब्रम कंट्रोल करूची तो सेटा हमर दीटा हेमिस्फियर्स डिवाइडेड हेगी अछि से दीटा हेमिस्फियर्स डिवाइडेड हेगी रहला पर से जो लिनिएज बा लिंक जो करूची सेटा हेगला हमर कोन सेटा हेगला कॉर्पस कैलोसम तो दीटा सेरेब्रल हेमिस्फियर एसोसिएटेड विथ सेरेब्रम सेटा हमरा कंट्रोल करछि मेमोरी आउ इंटेलिजेंस रीजनिंग आउ एक्टिविटीज ऑफ द आईक्यू एवडा को सब ठीक अछि मैम एक्सटेंडेड डेट हे जी गूगल रे शो करनी न्यू डेट हां 85% ऑफ द ब्रेन वेट देविका वेरी गुड 85% ऑफ द ब्रेन वेट हमरा ये कंट्रोल करछि गूगल रे शो करूनी सतस्वता सॉरी सुश्री किंतु तमे ओयूईटी रो ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी रिलीज हे गेलानी जे एक्सटेंड हे जाय डेट हैला गूगल रे अपलोड हेनी मे बी हैला गूगल रे अपलोड हेनी हेई जीव सेटा हैला बाकी मेक श्योर कि तमे डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड रह तो इधर ऑप्शन कोन हे जीव ऑप्शन नंबर बी हैला ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर so with this thank you everyone ajro class एतिके पई बोली थिला thank you so much for joining and I hope ajro class तमाना पई बोली helpful रबो question level केमिति थिला कोन लागिला and how was it helpful for you
केते तमे माने आंसर करि पारलो मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाइबो सी यू नेक्स्ट टाइम विथ सम अदर क्वेश्चन विथ अ न्यू टॉपिक है ना गोटे न्यू टॉपिक संगे किछ नुवा क्वेश्चन संगे पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच एवरीवन आ समस्त टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जिवो मु संगे संगे एई क्लास सरू सरू तुमको ये पीडीएफ फाइल टा शेयर कर ठीक अछि थैंक यू सो मच एवरीवन जय जगन्नाथ